Hello and welcome. Welcome to learning session number 6 of chapter number 3, which is life processes in living organisms, part 2. Okay, so far in this chapter, what all have we seen? Give me a minute. Okay, so we have seen introduction to this chapter. Then we had seen asexual reproduction in unicellular organisms. यहाँ पे हम लोग ने binary fission, multiple fission, etc. देखा था. Then we had seen it in multicellular organisms. What asexual reproduction? So यहाँ पे I remember we had seen vegetative propagation, we had seen budding, we had seen fragmentation. So all that was coming under asexual reproduction in multicellular organisms. Then we had seen sexual reproduction in plants. Okay, so in the first learning session under this topic we had only seen parts of flower. And why flower? Plants की बात हो रही है तो flower क्यों? Because flower is the functional unit of reproduction in plants. And secondly, क्या क्या parts दिखे थे? We had seen calyx, we had seen corolla, we had seen androecium, we had seen gynoecium. Then we had seen various processes. For example, pollination. Pollination क्या है? The transfer of pollen grains from anther to stigma is pollination. Then we had seen fertilization. What is fertilization? It is just the combining of male gamete and the female gamete. When they combine, we call it as fertilization. What is double fertilization then? When two haploid nuclei and one male gamete come together, then we call it as double fertilization. And lastly, we had seen germination. So germination में क्या होता है? फ्रूट सॉइल में चला जाता है एंड फ्रूट में से सीड्स बाहर आके एक नया plant बन जाता है. That is germination. Okay, so all these processes we had seen under sexual reproduction in plants. Okay, so today we are going to see sexual reproduction in human beings. But before we actually begin this topic, I had a few things to discuss. Okay, so first thing is, because in biology whenever you learn something new, you come across many different new terms. Okay, and generally वो terms बोलना काफी मुश्किल होता है, उनके spellings याद रखना काफी मुश्किल होता है. So especially for pronunciation, what I would say, whenever I'm speaking those words, नए नए जो words तुम लोग आज सीखोगे, whenever I'm speaking those words, say those words after me. Okay, repeat those words after me ताकि तुम लोग का pronunciation correct है. Secondly, don't be afraid if you're learning many new terms. Okay, तुम पहली बार इतने सारे नए terms देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, it will feel a little difficult, but don't be scared by it. Maybe watch the video again and again, read the portion read the portion on sexual reproduction in human beings in the textbook again and again, and I think you all should be fine and you all will start feeling comfortable. Okay, so repeat the words after me so that तुम लोग का pronunciation correct है. And secondly, don't be afraid because because you're seeing it for the first time, तुम लोग को difficult लग सकता है, but the more you read again and again, it will become more comfortable. And last thing, which is the most important, because we're going to talk about sexual reproduction in human beings, many people feel shy to talk about it, and there's something wrong about it. I'll tell you why. If you think it's important to talk about brain, it is important to talk about lungs, so why don't you think it's important to talk about our private parts? Because sexual reproduction in human beings, we are going to talk about our private parts, right? So it's very important to communicate things. For example, when you talk about cigarettes and why cigarette is harmful, etc., we say, okay, when we smoke, tar हमारे lungs में जमा हो जाता है, and that's why it's not good for our health. So we were so easily able to say कि अच्छा lungs में जमा हो जाता है, that's why it's problematic. Similarly, sexual reproduction में भी हमारे जो private parts है, we need to be able to communicate about it. Okay, because communication is very important. और जैसे हम लोग दूसरे body parts के बारे में बात करते हैं, वैसे ही we should be able to talk about our private parts as well. Okay, so firstly, one should not feel shy about learning this and communicating about this. Okay, secondly, वो shyness generally क्यों होता है? I will tell you, because you don't know the correct words about it. You feel कि अच्छा इसको कोई जो कोई भी word मुझे पता है, it's very bad word. Okay, but once you start learning the scientific terms for those body parts, then it becomes easier to communicate. Okay, so that's why knowing the scientific terms of these various body parts is also very important. इससे तुम लोग communication easily कर पाओगे उन body parts के बारे में. Okay, so communication is always very important in life and especially in science. So for communication, your shyness has to go away, and वो shyness कभी बाहर जाएगा? Firstly, knowing that we are learning science and it's important, and secondly, knowing the correct terms for each and every body part, that is also going to help you communicate about these body parts. Okay, with that, let us begin our learning session. Okay, so these are the words we're going to learn today.
I'm not going to list out all the words. There are many words. I told you, right? आज हम लोग बहुत सारे नए नए words सीखने वाले हैं. So I'm not going to say these out loud right now. जब भी हमारे learning session में ये words आएंगे, I will tell you the pronunciation and meaning. Okay? Okay. So before we actually begin today's topic, I just wanted to discuss this interesting bit given in your textbook. Okay. So pollination हम लोग ने पढ़ा, right? Anther से stigma तक जब पोलन ग्रेन्स जाएंगे, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन, वो जो एंथर और स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर्स के हो सकते हैं. सो जब सेम फ्लावर्स के होंगे तो इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, बट ये अलग अलग फ्लावर्स की भी तो हो सकते हैं. समझो एक फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया. सो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, और ये किसकी वजह से होता है? अगेन वी हैड सीन, राइट, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. एबायोटिक में विंड था, वाटर था, बायोटिक में बीज थे, राइट, हनी बीज विल डू दैट ट्रांसफरिंग. सो विंड को थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है या अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर हो रहा है, वो तो बस अपना काम करके चला जाएगा. सो दो आर टू इंटरेस्टिंग टर्म्स टू नो. सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेम फ्लावर में, क्रॉस पॉलिनेशन यानी अलग अलग फ्लावर्स में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब भी इस पे रिसर्च हो रहा है, ओके, इन चीजों पे जब भी रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट अभी रुकने वाले थोड़ी. अच्छा अभी हवा आएगी, हवा आने के बाद वो पोलन ग्रेन्स एंथर से लेके स्टिग्मा तक चले जाएगा, तब तक मैं वेट करूंगा या मैं वेट करूंगी. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद साइंटिस्ट्स, राइट. सो साइंटिस्ट क्या करने वाले हैं? साइंटिस्ट आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ ब्रश. सो लोग ब्रश लेंगे, वो एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकाल के वो लोग स्टिग्मा पे स्टिक कर देंगे. सो दैट्स व्हाट साइंटिस्ट्स आर गोइंग टू डू. Okay, so that is also an interesting thing to note about pollination. Okay, with that let's move ahead. Male reproductive system of human. Okay, so first point क्या है? Testes are present in scrotum outside abdominal cavity. So इसको मैंने pronounce कैसे किया? Testes को I have color marked it so that it's easy to pronounce. Okay, TES is test, TES is tes. Okay, testes. Next, SCRO, scro, TUM, scrotum. So testes and scrotum. But let's not go into that right now. अभी क्या देखना है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों चीज. सो एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? सो यहाँ पे राइट साइड में मैंने एक डायग्राम दिया. सो ये जो ब्रेन वाला कैविटी, कैविटी मतलब क्या? एक एम्प्टी स्पेस, खड्डा. ओके, सो ये जो ब्रेन वाला जो कैविटी होता है, दैट इज नोन एज क्रेनियल कैविटी. ओके, क्रेनियल कैविटी. नेक्स्ट, ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, ओके, दिस कैविटी, हमारे बॉडी के अंदर ये जो रिब केज के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज थोरासिक कैविटी. ओके, ऑल दिस नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, सो क्रेनियल कैविटी, थोरासिक कैविटी. नेक्स्ट, यहाँ पे पेट के आजू बाजू, ओके, पेट के आजू बाजू इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. एंड लास्ट, पेट के नीचे इज pelvic cavity. Okay, so these are the important cavities in your body. Cranial cavity यानी ब्रेन के आजू बाजू वाला, thoracic cavity यानी चेस्ट के आजू बाजू वाला, abdominal cavity यानी पेट के आजू बाजू वाला, एंड लास्टली pelvic cavity पेट के नीचे. ओके, सो वो लोग क्या बोल रहे हैं? टेस्टिस एंड स्क्रोटम आर आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी. सो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है पेट के नीचे आएगा, सो इट्स ऑलमोस्ट इन pelvic cavity. ओके, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी यानी उसके नीचे, सो इट्स ऑलमोस्ट इन pelvic cavity. That's your first point. Okay, let's move ahead. So testes are present in scrotum. So what are testes? यहाँ पे these are testes. Okay, यहाँ पे जो मैं if you look at my red pointer, these are your testes. And what is scrotum? Scrotum is basically a pouch of skin जिसके अंदर testes है. Okay, I'll repeat that. Scrotum क्या है? Scrotum is just a pouch of skin जिसके अंदर testes है. Okay, and it is outside abdominal cavity. Abdominal cavity क्या है? We have already seen. So that was your point number 1. Second point, testes contain numerous seminiferous tubules. Okay, so see now how am I pronouncing this word? Semi, S-E-M-I, semi, N-I-N-E, ferous, F-E-R-O-U-S, ferous, seminiferous. Okay, so repeat this word after me. Seminiferous, seminiferous. Okay, so again I don't think we I give you all time to repeat these two words after me. Okay, so again let's do the pronunciation. Okay, so testes, so T-E-S, test, T-E-S, peace. Okay, I know दोनों दोनों T-E-S है, but the pronunciation remains same. Okay, so
Repeat this word after me. Testes. Testes. Next, scrotum. Scrotum. Okay, so we have learned the pronunciation of the word testes and scrotum. Okay, and now we are seeing seminiferous. So testes contain seminiferous tubules. Okay, so ये जो testes है इसके अंदर there will be seminiferous tubules. Seminiferous का मतलब क्या है? Seminiferous यानी semen producing. ओके, सेमिनिफरेंस का क्या मतलब है? सीमन प्रोड्यूसिंग. अभी सीमन क्या है? सीमन इज टाइप ऑफ अ लिक्विड, और वो लिक्विड किससे बनता है दैट विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स. ओके, बट फॉर नाउ you'll need to know what you'll need to know is सेमिनिफरस का मतलब है सीमन प्रोड्यूस करने वाला. सीमन इज अ लिक्विड एंड ट्यूब्यूल्स का मतलब तो हमें पता है, ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब होंगे. सो ये सब किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर, इनसाइड दिस. ओके, नेक्स्ट, जर्मिनल एपिथीलियम. अगेन एपिथीलियम ये वर्ड कहीं पे सुना हुआ लग रहा है, एपिथीलियम. So epithelium is a type of tissue. We had seen in detail in grade 9 epithelial tissues, with the various types of epithelial tissues. So epithelial tissue generally organs का covering होता है to protect that organ. Okay, so यहाँ पे germinal epithelium present होता है कहाँ पे? In the tubules which divide by meiosis to produce sperms. So इसके अंदर जो ये जो tubules है उसके उसको कवर, उसका जो कवरिंग है वो किसका कवरिंग है? जर्मिनल एपिथेलियम. व्हाट इज एपिथेलियम? इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू. सो जर्मिनल एपिथेलियम से उसका कवरिंग बन रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स. व्हिच ट्यूब्यूल्स? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. ओके, एंड वो डिवाइड होने वाला है मियोसिस से और स्पर्म्स बनने वाला है. व्हाट आर स्पर्म्स? स्पर्म्स आर द मेल गैमेट. Okay, so for sexual reproduction you need a male cell and you need a female cell which will come together and form a new organism, right? So main reproductive cell in humans is known as sperm. Okay, so it is going to divide by meiosis and it is going to form sperm. So ये सब कहाँ पे हो रहा है? All this seminiferous tubule वगैरह is happening inside the testes. Okay, next, those sperms are sent forward through various tubules. So जो sperms form हो रहे हैं meiosis से, वो आगे जाके अलग अलग ट्यूब्स में से पास होने वाले. ओके, वो लोग आगे बढ़ने वाले ट्यूब्स में से. ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली ट्यूब्स. तो उनका सीक्वेंस दिया. ओके, सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूब्यूल्स इज एज follows. So again there are many new words here, so and I've color marked them so that the pronunciation is easy. First is rete test. Okay, यहाँ पे I missing है. Okay, let me quickly correct this. Okay, so yes, rete testis. Okay, the first one is rete testis. Next, epididymis. Okay, epididymis. So epi epi, di die, dy die, di भी die है, dy भी die pronounce हो रहा है. दोनों का pronunciation same है. And mis is miss. Okay, epididymis. Next, vas, vas, deferens, de de, fe fe, rens, rens, deferens, vas deferens. Okay, rete testis, epididymis, vas deferens. Next, ejaculatory. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? E for E, J A is ja, C U is Q, L A T O R Y is latory. Okay, ejaculatory. So rete testis, epidermis, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct. Okay, इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं? urinogenital duct. Duct मतलब क्या? Duct मतलब एक ट्यूब. ओके, duct is basically a tube. So वो जो स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस से, कहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं? ऑल दैट इज हैपनिंग इन इनसाइड हियर. ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो टेस्टिस के अंदर है, उसके अंदर मियोसिस से स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं. वो स्पर्म्स ट्यूब से पास होते होते आगे बढ़ते जाने वाला है. और उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आएगा रीट टेस्टिस. ओके, दिस इज इनसाइड द टेस्टिस. उसके बाद एपिडिडेमिस. एपिडिडेमिस यू कैन सी इट हियर, राइट? यहाँ पे ये जो स्फेरिकल चीज है उसके बाहर पे जो चीज है दैट इज एपिडिडेमिस. ओके, सो रीट टेस्टिस में से वो एपिडिडेमिस में जाने वाला है. नेक्स्ट, वास्ट डिफरेंस. व्हाट इज वास्ट डिफरेंस? यहाँ पे वास्ट डिफरेंस. सो ये जो लंबा सा ट्यूब है दैट इज योर वास्ट डिफरेंस. सो पहले रीट टेस्टिस, उसमें से एपिडिडेमिस, फिर बाद में वास्ट डिफरेंस में जाने वाला है. नेक्स्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट. व्हाट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट? यहाँ पे नीचे. ओके, सो यहाँ से लेके
वो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में जाने वाला है। लास्टली यूरिनोजेनिटल डक्ट विच इज हियर, यहाँ पे उसका नाम लिखा है, एंड ये जो सीधा लाइन है दैट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। व्हाई यूरिनोजेनिटल डक्ट? सो यूरिन, यूरिन का मतलब क्या? यूरिन मीन्स आवर वेस्ट प्रोडक्ट, राइट, आवर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज जेनिटल? जेनिटल का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, सो यहाँ पे इफ यू सी दिस इज आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल्सो, एंड यहाँ से ही आवर यूरिन इज thrown out of our body. If you see यहाँ पे urinary bladder है। urinary bladder, if you all remember, we had seen in 9th standard when we were studying excretion. Okay, excretion जब हम पढ़ रहे थे, that time we had seen urinary bladder. तो यहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, and that is also going to be thrown out of the body through urinogenital duct. So ये दो वर्ड से बना है, यूरिन और जेनिटल। यूरिन मतलब आवर लिक्विड वेस्ट जो हम लोग एक्सक्रीट करने वाले हैं, एंड जेनिटल मीन्स आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो यूरिनोजेनिटल, ये दोनों क्योंकि वो ट्यूब दोनों का काम कर रहा है, so it is going to go through urinogenital. So again I'm going to quickly revise. यहाँ पे टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर मियोसिस से स्पर्म्स फॉर्म होने वाले, वो स्पर्म्स फिर बाद में अलग अलग ट्यूब में से पास होने वाले। पहले रीट टेस्टिस में से वो जाने वाला है एपिडिडेमिस में, एपिडिडेमिस से वो जाने वाला है इस वाले लंबे वाले ट्यूब में से विच इज कॉल्ड एज वास्ट डेफरेंस। वास्ट डेफरेंस इट इज गोइंग टू एंटर द इजैक्युलेटरी डक्ट, इजैक्युलेटरी डक्ट में से इट इज गोइंग टू गो इन यूरिनोजेनिटल duct. Okay, what is the meaning of duct? Tube. So far so good, I hope so. Next, as these sperms are pushed forwards from one duct to the next, they become mature and able to fertilize the ovum. So जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, sperm is going ahead from testis to our urinogenital duct. ऐसे जो एक डक्ट में से दूसरे डक्ट में जा रहा है तब तक वो मेच्योर होते जाने वाला है। मेच्योर यानी वो ग्रो होने वाला है। ओके, मेच्योर यानी वो ग्रो होने वाला है, एंड जब वो ग्रो हो जाएगा तब वो फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। फर्टिलाइज करना यानी क्या? फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कमिंग टुगेदर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओवम क्या है? Guess what is ovum? Sperm is the male reproductive cell, and fertilization yani male and female reproductive cell coming together. So sperm is going to combine with the ovum, yani ovum kya hai? Ovum is female reproductive cell. Okay, so ovum is a female reproductive cell. So that's your point number 2 कि जैसे वो डक्ट से एक डक्ट से दूसरे डक्ट में जाएगा, it is going to get mature, mature यानी grow होने वाला है। Okay, next, seminal vesicles. Again, just look how am I pronouncing. Okay, ve, SICCLES is culls, vesicles. Okay, and seminal, seminal मतलब क्या होगा? Something related to semen, मैंने बोला था, राइट? सेमिनिफरस यानी सीमन प्रोड्यूसिंग। सो सीमन मैंने बोला था एक लिक्विड होता है। सो सेमिनल वेसिकल्स यानी सीमन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओके, सो सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट, सिक्रीट का मतलब क्या? प्रोड्यूस करना। ओके, या फिर रिलीज करना, प्रोड्यूस करके रिलीज कर देना, उसको बोलते हैं सिक्रीट या सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कोई तो लिक्विड इन इजैक्युलेटरी डक्ट्स। इजैक्युलेटरी का क्या मतलब है? डक्ट का मतलब तो हमें अब पता चल गया है, डक्ट मतलब एक पाइप जैसी चीज, एक ट्यूब जैसी चीज। इजैक्युलेटरी मतलब क्या? इजैक्युलेशन मतलब throwing out of the body. Okay, ejaculation मतलब throwing out of the body or releasing out of the body. So क्योंकि हम लोग अभी इसको सीमन को बॉडी से बाहर फेंकने वाले, that is why it is known as ejaculatory duct. उस डक्ट में से बॉडी के बाहर जाने वाला है। ओके, सो सेमिनल वेसिकल्स कहाँ पे है? यहाँ पे वो जो ब्लू कलर के दो चीजें दिख रही है, दो सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट करने वाले यानी रिलीज करने वाले लिक्विड को सिक्रीशन यानी लिक्विड इन इजैक्युलेटरी डक्ट। तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये इजैक्युलेटरी डक्ट, ये जो लंबा सा ट्यूब है, डक्ट है, उसके अंदर रिलीज करने वाले अपना लिक्विड। नेक्स्ट, प्रोस्टेट। ओके, सो PRO प्रो, STATE स्टेट, प्रोस्टेट। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, दिस इज आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कूपर्स ग्लैंड। ओके, ये COW काउ होता है, बट इट्स नॉट pronounced as cowpers, it is pronounced as cooper. Okay, so cooper gland कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, so that is cooper gland. So cooper gland again is going to release their secretions कहाँ पे? urinogenital duct में, so यहाँ पे। Okay, urinogenital duct is here. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है? ये जो सेमिनल वेसिकल्स है जो ब्लू कलर के हैं, वो कहाँ पे सिक्रीट करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू सिक्रीट इन इजैक्युलेटरी डक्ट, यहाँ पे। ओके, वेरएस
कूपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड, ये लोग दोनों कहाँ पे सिक्रेट करने वाले हैं? दे गोइंग टू सिक्रेट इन यूरिनोजेनिटल डक्ट। सो दो चीजें, तीन चीजें। एक चीज जो सेमिनल वेसिकल है वो इजैकुलेटरी डक्ट में सिक्रेट करने वाला है, रिलीज करने वाला है, और बाकी जो दो चीजें हैं विच इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर ग्लैंड, ये लोग दोनों यूरिनोजेनिटल डक्ट में सिक्रेट करने वाले हैं। सो ये इस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट में बोला है। नेक्स्ट, सीमन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स। ओके, सो चार चीजों से सीमन बन रहा है। किन चार चीजों से? एक तो सेमिनल वेसिकल का जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, थर्ड कूपर ग्लैंड का जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, एंड लास्टली स्पर्म्स। स्पर्म्स कहां से बन रहे हैं? टेस्टीज में से, राइट? सो इन चार चीजों को मिला के तुम लोग का सीमन बन रहा है। ओके, so semen is formed of sperms and secretion of all these glands. Semen is ejaculated out through penis. Okay, how do you pronounce this word? Penis. P-E-P-N-I-S is pronounced as nus. Okay, penis. So semen is thrown out. Ejaculated out matlab thrown out of the body through penis. So this is your penis, right? उसमें से ये जो semen तैयार हुआ है, that is going to be thrown out of the body. Okay. Last point. All organs of male reproductive system are paired except urinogenital duct. Okay, सब कुछ पेड है। पेड यानी डबल डबल है, पेयर यानी दो, राइट? सो सब कुछ डबल डबल है एक्सेप्ट यानी इन तीन चीजों के बिना। किन तीन चीजों के बिना? एक्चुअली चार चीज। यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये जो है लंबा सा यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये जो ट्यूब है वो एक ही है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेयर इज प्रोस्टेट ग्लैंड? यहाँ पे, राइट? वो भी एक ही है, डबल डबल नहीं है। थर्ड इज पीनस, यहाँ पे वी कैन सी इट्स ओनली वन। एंड लास्टली स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या था? हम लोग ने देखा था, इट्स अ पाउच ऑफ स्किन जिसके अंदर टेस्टीज होते हैं। ओके, सो स्क्रोटम भी एक ही है। सो यहाँ पे तुम लोग को दो दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा पतला सा लाइन, और यहाँ पे दूसरा दिखेगा पतला सा लाइन, बट एक्चुअली इट्स इन कंटिन्यूअम। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन। तो ये चार चीजें सिर्फ सिंगल है, बाकी सब चीज डबल डबल है। ओके, सो इफ यू सी, यहाँ पे कूपर्स ग्लैंड डबल है, सेमिनल वेसिकल डबल है, then you can see epididymis double है। so all of these are double उसको कैसे बोला है वो लोग ने? paired है। paired यानी there are two in number। okay, so that's your male reproductive system. I'm going to quickly revise. Inside our testes there are seminiferous seminiferous tubules। seminiferous यानी semen producing tubules। okay, those are going to pass from tubes to tubes। तो पहले रीट टेस्टीज में से एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस में से इट विल गो इन वास डेफरेंस, ये जो ट्यूब है वास डेफरेंस से इट विल गो इन ejaculatory duct। okay, then when the sperm is passing from one duct to the other, वो mature होगा, और mature होके it is going to finally be able to fertilize with ovum। ovum is female reproductive cell। next, semen कैसे produce होता है? तो semen is going to produce from firstly seminal vesicle, जो secrete कहाँ पे, release कहाँ पे करने वाला अपना liquid? it is going to release in, give me a minute, it is going to release its liquid in ejaculatory duct, and next the remaining two, which is prostate gland and Cooper's gland, they are going to release it in urinogenital duct। okay, so इन चार चीजों से sperm यूरिनोजेनिटल डक्ट में जो दो चीजें आ रही है, कूपर ग्लैंड में से और प्रोस्टेट ग्लैंड में से, एंड लास्टली सेमिनल वेसिकल में से जो ग्लैंड्स आ रही हैं, इन चारों को मिलाकर सीमन बन रहा है, एंड दैट सीमन इज गोइंग टू बी इजैकुलेटेड आउट फ्रॉम आवर पीनस। ओके, सो दैट्स योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, these are some just facts, interesting facts about these organs। so I'm not going to explain all of these, but I highly recommend you pause the video here and just go through all of them। okay, or you can just find this in your textbook as well। so I'm not going to explain all of them, pause the video here and just read all the 4 points। okay, we are going to move ahead now। female reproductive system। okay, so male reproductive system was actually more difficult, female reproductive system is a little more easy to understand। okay, so first point, all organs of female reproductive system are in abdominal cavity। so ये जो cavity है abdominal cavity, यहाँ पे female reproductive system है, whereas male reproductive system abdominal cavity के थोड़ा बाहर था, whereas this is inside abdominal cavity। next, it includes pair of ovaries। okay, so यहाँ पे देखो
वन ओवरी एंड जो वही सेम लेफ्ट साइड में भी है. सो राइट साइड ओवरी, लेफ्ट साइड ओवरीज, दो ओवरीज, पेयर यानी टू, and a pair of oviducts. So if you see, this part is known as oviduct. यहाँ पे भी one oviduct here and one oviduct there. So pair of oviducts बोला. Okay, and oviduct again is made up of two words. Ovi यानी ovary, duct यानी tube. So oviduct यानी ovary का tube. Okay, so that's your oviduct. And single uterus. Okay, how do you pronounce this? U के लिए pronunciation is U. TE is pronounced as T. T is pronounced as T, RUS is rus, uterus. Okay, again uterus तुम लोग को सुना सुना लग रहा होगा, right? Why do you feel that? क्योंकि uterus को again we had seen in detail in our excretion system, which we were studying in 9th standard. Okay, so that's your uterus, जहां से you are going to release urine out of your body, which is waste material for your body. Okay, and vagina. Okay, again how do you pronounce this? VA, GI, Jai, and Na, na, vagina. Okay, so single uterus, एक uterus होगा, and a यानी one, vagina. Okay, vagina you can see here, uterus you can see here. Okay, besides, a pair of Bartholin's gland is also present. How do you pronounce this? BAR bar, THO tho, LIN lin, Bartholin. Okay, a pair of Bartholin's gland is also present. Okay, कहीं पे तो Bartholin's gland भी होगा. So these are the parts of female reproductive system. Next, generally every month an ovum is released in abdominal cavity. Ovum, what we had already we had already seen, right? What is ovum? Ovum is the female reproductive cell. So हर महीने में एक ovum is going to be released in abdominal cavity. बट यहाँ पे अभी हमारे पास दो ओवरीज है, राइट? यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ओवरी और राइट साइड में एक ओवरी, तो कहाँ से कब रिलीज होगा? सो alternately from each ovary. So अगर लास्ट टाइम लेफ्ट साइड के ओवरी से रिलीज हुआ था एक ओवम, तो नेक्स्ट टाइम राइट साइड के, अगेन नेक्स्ट टाइम लेफ्ट साइड से. सो ऑल्टरनेट करते रहेगा, समटाइम्स लेफ्ट साइड, समटाइम्स राइट साइड, ऑल्टरनेटली एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होने वाला है एब्डोमिनल कैविटी में. अगेन एब्डोमिनल कैविटी वी हैव ऑलरेडी सीन, हमारे पेट के आजू बाजू जो कैविटी है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट. ओके, सो ये जो फ्री एंड है ओविडक्ट का, वहां पे द शेप इज फनल लाइक. व्हाट इज फनल? बेसिकली कोन या फ्रस्ट्रम का शेप का. ओके, फनल. सो कभी कभी अगर समझो तेल एक बॉटल में डालना होगा, तो ऊपर वो लोग एक ऐसा कोन रख देते हैं, राइट? फिर उस कोन का जो ओपनिंग होता है बड़ा होता है, फिर उसमें तुम लोग तेल डालोगे तो बराबर बॉटल के अंदर चला जाएगा. सो दैट इज नोन एज अ फनल. तो उसका शेप फनल जैसा है. ओके, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट. एंड एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट. उसके सेंटर में ओविडक्ट के देयर इज अ ओपनिंग. ओके, oocyte. How do you pronounce this? Oocyte. Double O ko you will pronounce O. CYT is site. Oocyte. So oocyte enters the oviduct through that opening. Now what is oocyte? Ovum तो पता चल गया. Ovum is your female reproductive cell. So ovum कैसे बनने वाला है? Ovum basically oocyte से बनने वाला है. Okay, that's the connection. So when ovum is going to divide using meiosis, तब ovum बनेगा. Okay, so oocyte में से ovum बनने वाला है. So oocyte is going to enter the oviduct through that opening. वो जो opening है funnel shape का, funnel shape के oviduct में जो सेंटर में ओपनिंग है वहां से oocyte एंटर करने वाला है. सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट. सीलिया क्या है? सो बेसिकली सीलिया इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, पतले से ऐसे रॉड टाइप्स होंगे जो बार बार वाइब्रेट करते रहेंगे, और वो वाइब्रेशन से क्या होने वाला है, वो जो oocyte है वो आगे पुश किया जाएगा. So that's your cilia. Okay, so these cilia push the oocyte towards, wait for that black part to go away, uterus. Okay, so these cilia will push oocyte towards uterus. So oviduct में से यूटरस तक आने के लिए सीलिया पुश करने वाला. व्हाट इज सीलिया? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वाइब्रेट होके oocyte को आगे पुश करने वाले, एंड oocyte में से ओवम बनने वाला, एंड दैट ओवम इज गोइंग टू गेट अटैच्ड टू द मेल reproductive cell. Okay, next. That's it. So I told you, all right, female reproductive system is a little easier to understand. Okay, so that's your male and female reproductive system. As a practice question, I want you all to solve the end of chapter question on page number 35, which is sketch the label diagrams. Okay, so पहले दो करने तुम लोग को human male reproductive system, and the second one is human female reproductive system. So basically in A part you all will draw this diagram, and in the B part you all will draw this diagram. Okay, so make sure you are drawing those
diagrams very correctly, neatly, and labeling them very neatly, okay, so that I can see the labelings very well. So that's your practice question for this learning session. And finally, these are the words we learned today. Seminiferous मतलब क्या? Seminiferous यानी जो semen produce करता है. Okay. Ovum is basically our female reproductive cell. Oocyte is a cell in ovary. Ovary के अंदर एक cell होता है जो meiotic division से ovum बन जाएगा. Okay. Meiotic division से ovum बन जाएगा. Next, cilia एक short मतलब पतले, छोटे, माइक्रोस्कोपी यानी एकदम छोटे, हेयर लाइक, बाल के शेप जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स है. स्क्रोटम आई टोल्ड यू, इट्स अ पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग द टेस्टिकल्स. सिक्रीट यानी रिलीज करना, डक्ट यानी ट्यूब, इजैकुलेट यानी रिलीज, थ्रोइंग आउट ऑफ द बॉडी, एंड लास्ट इज जेनिटल्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो जो वर्ड है यूरिनोजेनिटल डक्ट, तो दो वर्ड से बना, यूरिन एंड जेनिटल. यूरिन इज द वेस्ट, लिक्विड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड जेनिटल इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो यूरिनोजेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव भी है और उसमें से यूरिन भी पास होने वाला है. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स वी हैव लर्न टुडे. So that's it for this learning session. I hope you all understood it. And again, if you all are feeling you all haven't understood because इसमें बहुत सारे नए नए words हम लोग ने सीखे, make sure you're watching the video again and again. And if you don't want to watch the video again and again, just go through your textbook once more. एक बार textbook में read कर लें ये सब topics, and you have the list of meanings of the words, right? वो meaning जो तुम लोग नोटबुक में कॉपी करके रख रहे हो उसको सामने रख के फिर टेक्स्ट बुक रीड करने की कोशिश करो, and then I think it should be easier. Okay, so that's it for this learning session, and I'll see you all in the next learning session. Till then, peace, bye.